Anti-CAA protests that began in Delhi, Shaheen Bagh, and still continues. Shaheen Bagh in Delhi, where women protesters have taken center stage, camping out in the cold night after night for over 2 days. Shaheen Bagh satyagrah ka The women of Shaheen Bagh in New Delhi are undeterred by the 26 dead, arrests of 1,000 and the biting cold. A neighborhood in the Muslim-dominated Okhla constituency in the south of India's capital, Shaheen Bagh. It has been at the forefront of protests against India's Citizenship Amendment Act and the National Register of Citizens. The bill that was passed on 11th December 2019 paved way for fast-track citizenship to illegal migrants from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh who entered India before 31st December 2014. It is only applicable to Sikhs, Jains, Christians, Hindus, Parsis and Buddhists, the religious minorities in these three Muslim countries. The act has faced criticism and triggered protests across the country for excluding Muslims. Following police brutality on the students of Jamia Millia Islamia University and Jawaharlal Nehru University of Delhi, women have been at a constant sit-in protest from 15th December 2019. Muslim women are at the forefront of these protests. It has also inspired several sit-in protests led by women across India and the world. The women are on an indefinite strike for more than 2 months now. Delhi witnessed the second coldest winter since 1901 during that period. There is no better way to understand Shaheen Bagh than to go there. As one enters, there is a yellow marquee which has a small stage with mics that hosts performers, activists, students, speakers and anyone who is there to address the protesters. The protesters strictly did not allow anyone from any political party on the stage, for the ruling party alleged that opposition sparked these protests. The angst among young people joining is apparent with their belief that the act, which will be followed by a National Register of Citizens, could take away the citizenship of Indian Muslims. Pictures and writings of revolutionary reformers like Jyotiba Phule, B.R. Ambedkar, Mahatma Gandhi, Maulana Azad and Bhagat Singh could be seen on the roads around the marquee. A bus stop has been transformed to a public library. It is named after the first women educators of India, Savitribai Phule and Fatima Sheikh. The protesters believe that this fight is for the secular fabric of India. A foot-over bridge has been turned to an art exhibition that has posters and drawings made by children that express unity and brotherhood among all religions in India. Though the protests are joined by young people across Delhi, with more people during weekends than usual, one thing constant is the women who sit there. What brings them there? What difficulties are they facing? Shehzad Fatima and Sakina Begum say, घर में धक्के लगते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं, हमारा यहाँ हमको रहना चाहिए, वहाँ पहुँचना चाहिए। हम लोग को ऐसा लगता है कि अभी हम यहाँ आए हैं, पता नहीं हमारे बहनों कैसे बैठी होंगे, चले हम अपनी बहनों का साथ देने। यहाँ हमको रहना सही नहीं है, वहाँ रहना सही है, हमारे बहनों को साथ देना। कितनी लेडीज़ बीमार हो चुकी हैं, 15-15 दिन बीमार रह के आ रही हैं, जिसको नज़ला हो गया है 15-15 दिन से कम में नहीं, जाड़ा बुखार नज़ले, वो हिसाब है कि पब्लिक कितनी है, 10 जा रहे हैं तो 20 आ रहे हैं, समझ गए, जिसमें कुछ पता नहीं चल रहा। वरना बच्चे बीमार हो रहे हैं घरों के अंदर, नज़ले, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, कितनी परेशानी सब कुछ उठा रहे हैं। और वही दिन था कि मोदी जी को खुशी खुशी गए थे वोट देने, आज उन्होंने अपनी हरकतों से वो दिन कर दिया कि रोड पे बिठा दिया। हम कभी घर से नहीं निकले, आज हम रोड पे बैठे हैं। हम लोग कुछ अपनी अहमियत रखते हैं, कुछ हमारी इज्जत है,
और आज हम किस लिए बैठे हैं? सिर्फ पूरे वतन के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान का आदमी पूरी दुनिया में पहुंचा हुआ है। आखिर उन लोगों को भी ठेस पहुंच रही है। बाहर मुल्कों में भी शाहीन बाग बन रहे हैं, कोई तो दर्द। Despite these difficulties, what they talk about is Hindu-Muslim unity. हम अपने मुल्क में बड़ी हंसी खुशी रहते हैं, एक की परेशानी में एक काम आते हैं। हमारे मुहर्रम होता है, वो पानी पिलाते हैं। हमारे उनके कोई त्यौहार होता है, हम लोग शरबत करते हैं, पानी पिलाते हैं। हम लोग बड़े सुकून से मिलजुल के रहते हैं। लेकिन मोदी जी इस गद्दारी पर उतर गए कि हम सबको अलग अलग करना चाहते हैं, लिहाजा हम अलग होना नहीं चाहते। हम जिस हाल में रह रहे थे हम उसी हाल में खुश हैं। मोदी जी बहुत अच्छे दिन ला रहे थे, हमें इतने अच्छे दिन की ज़रूरत नहीं है। The ruling Hindu nationalist Bharatiya Janata Party has been stern on implementing the act, looking away from these protests. There have been attempts to malign the protest, saying that the women were paid 500 rupees for sitting there. The protest has garnered so much attention that even the Home Minister Amit Shah mentioned it during an election rally. तो बटन दबाओ तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। हम तो हिंदू को ही इतना खुश होकर वोट देते हैं, क्यों देते? अपना भाई समझते हैं, तो वो हमें इतना गैर क्यों समझ रहे हैं? कोई मजदूर हुकूमत तो नहीं मांग रहा, कोई मुसलमान हुकूमत तो नहीं मांग रहा। Apart from social media campaigns to malign the protests, there was something serious that happened on the ground in Shaheen Bagh itself. Following a Jamia student getting shot at on 30th January, 2 days later, on 1st February, a young man named Kapil Gujjar allegedly fired 2 bullets in the air. How did the protesters react to it? How did this affect their morale? Sakina Begum says, और हौसला मजबूत हुआ है, और हमारे हौसला मजबूत हुआ है। वो चाहे तो गुंडे भेजे या आंसू बम छोड़े या चाहे तो लेडीज़ पुलिस भेजे, बाकी हम लोग उठेंगे नहीं। CA NRC MPR के खिलाफ बैठे हैं तो अपनी हक के लिए बैठे हैं, अपनी हक लेके जाएंगे। चाहे वो जितने गुंडा भेजें, जितने यहाँ गोलियाँ चला दें, जितनी यहाँ अब गुंडे भेज दें, अब हम उठने वाले नहीं हैं। जब तक हमारे कानून नहीं हटेगी, जब तक नहीं हटेंगे। there may be several definitions to protests and revolutions across the world, but this is how the women of Shaheen Bagh see themselves. एक परिंदे का नाम शाहीन है जो कभी हार नहीं मारता, सबका शिकार करता है, कुछ शिकार नहीं होता है। वो ये जगह है, इस नाम है, इसलिए यहाँ की औरतें भी इस तरह की ही हैं, कभी हार नहीं मारेंगी। चाहे मोदी कुछ कर ले, वो उनको पीछे हटना पड़ेगा, हम पीछे नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। खुशी से रंज उठाए कोई तो हम जाने, सबात शाह दिखाए कोई तो हम जाने। हम खुशी से रंज उठा रहे हैं, उम्मीद करके कि हमारा गम दूर होगा। बाकी तवक्कल तो अल्लाह, कुदरत पे तवक्कुल है। जो दुश्मन को मिटाता है, जो उस पे यकीन है, वो हमेशा उम्मीद पूरी है कि हमारे हक़ में जो करेगा बेहतर करेगा। तवक्कल तो अल्लाह। आए हैं सर से कफन बांध के, ऊपर जाएं कोई गम नहीं, मौत पहले है ज़िंदगी बाद।